Assalamualaikum everyone, my name is Hamid Hussain and today we will going to learn about cost accounting. In this lecture, I will explain you in detail what is cost accounting and I hope you will enjoy my lecture as well. I will explain this definition in both language so that दोनों language के students can easily understand what basically cost accounting is and why we are using cost accounting. When we talk about cost accounting, so first we will have to understand what is costing and why we need costing. Basically, costing refers to the process of cost finding. It is defined as the technique and the process of ascertaining cost. Whenever we need to find cost, we need to go through some process through which we can find out the cost of that particular item or particular goods or services. And why we need cost? Because we need to set a price of our product or service. That's why we need cost. So if the cost is computed systematically with the exact process, it can be very helpful for company to find out the real profit. So now let's talk about cost accounting. It is defined as the application of accounting and costing principles, methods, and techniques in the ascertainment of cost and the analysis of saving or excess as compared with the previous experience or with the standard. So what happens whenever we make something, we make a product or we give some service and we have some standards in our mind that we need to complete our product or we need to prepare our product within certain limits. And why we have some standards? Because the means, the resources are scarce and we need to utilize complete resources to attain more and more products. तो जब भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं, बेसिकली एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें हम मेथड्स को, टेक्निक्स को फॉलो करते हैं ताकि हम कॉस्ट को सेव कर सकें. अब कॉस्ट को सेव किस तरह करेंगे? हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को देखते हैं कि लास्ट ईयर एक चीज़ हमें कितने में बन रही थी, उसकी कॉस्ट क्या थी, हमने क्या चीज़ कितने में खरीदी. लेट सपोज रॉ मटेरियल कितना था, कितना लगा उस प्रोडक्ट पर, लेबर कितने की चार्ज हुई, बिजली का बिल कितना आया, गैस का बिल कितना आया, और हम इस बार से कंपेयर करते हैं उसे और फिर कोशिश करते हैं कि कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सकें. यहाँ हम कुछ अपने स्टैंडर्ड रखते हैं. स्टैंडर्ड क्या है? बेसिकली कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये 10 रुपये में बननी चाहिए. अब अगर वो प्रोडक्ट 11 रुपये में बन रही है तो वी फाइंड आउट कि हाँ भाई 11 में बन रही है, लॉस होगा, आगे उसकी प्राइस भी सेट करनी है, हमें वो हमारी पॉसिबल है कि कॉस्ट भी रिकवर ना हो. तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम वो स्टैंडर्ड सेट करें एंड देन वी फोकस्ड ऑन द स्टैंडर्ड और फिर उस स्टैंडर्ड तक ले आएँ गुड्स की कॉस्ट को या सर्विसेज की कॉस्ट को या उससे कम पर ले जाएं. So in order to maintain the standard, in order to follow the standard, we must find out the exact cost of the product. For that, we use cost accounting. So let's have a look of another definition of cost accounting. The application of costing and cost accounting principles, methods and techniques to the science, art and practice of cost control and the ascertainment of profitability. It includes the presentation of information derived there for the purposes of managerial decision making. This definition is presented by C.I.M.A, London, and why we need cost accounting and why we use cost accounting. This definition is basically the true and best definition of cost accounting according to me, because here they're describing that it is science and art too. Whichever technique you are practicing in cost accounting, it backed by a whole research. That's why it is called science. And why it is called art? Because you are practicing. It is not just merely theoretical subject. You follow the techniques, you follow the method and ascertain the cost. And that is why cost accounting is very important whenever you're going to make decision whether you should
मेक अ प्रोडक्ट और यू शुड जस्ट लेट गो द प्रोडक्ट। यहाँ पर जब भी हम देखते हैं तो एप्लीकेशन इस डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग एक साइंस भी है। साइंस क्यों? जब भी हम साइंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं नॉलेज अटेन थ्रू ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट्स। कॉस्ट अकाउंटिंग के जो मेथड्स टेक्निक्स हैं वो रिसर्च बेस्ड हैं, उन पर बाकायदा रिसर्च की गई है और रिसर्च करके वो मेथड्स को एक्वायर किया गया। आर्ट क्यों? क्योंकि हम इसे प्रैक्टिस करते हैं अपनी बिजनेस लाइफ में। ये जस्ट थ्योरी नहीं है, इसे प्रैक्टिस करके हम एक फ्रूटफुल रिजल्ट हासिल करते हैं। वो रिज़ल्ट क्या है? वो रिज़ल्ट है कॉस्ट को कम से कम करें और अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। ठीक है। एंड नाउ फॉर द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है? मैनेजमेंट ये डिसीजन लेती है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, कॉस्ट एनालिसिस, CVP एनालिसिस, जिसको हम आगे देखेंगे कि आया they should continue with the particular good or providing the services, और उन्हें उस काम को, उस चीज़ को रोक देना चाहिए बेस्ड। और ये तमाम चीज़ें बेस करती हैं किस चीज़ पर? ये तमाम चीज़ें बेस करती हैं आपकी कॉस्ट रिपोर्ट पर। और आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाजमी फेसबुक पर हमारे पेज कॉमर्स ऑनलाइन को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।